For latest videos of Radio Udaan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ और इस वक्त मैं हूँ मीना सिंवी आपके साथ, वही आपका फेवरेट शो टेक सिटी में। जी हाँ, बिल्कुल, अभी हम टेक सिटी में हैं और वैसे तो हम बातें कर रहे हैं अभी एमएस ऑफिस की, लेकिन आज हम लाए हैं कुछ एप्स आपके लिए जो कि कुछ लिसनर्स की डिमांड थी और बहुत, जैसे कहते हैं ना, मार्केट में छाई है ये ऐप। जी हाँ, काफी र्यूमर है, काफी बातें हो रही है इस ऐप को लेके, इन एप्स को लेकर। तो हमने सोचा कि चलो सबसे पहले इन ऐप का ही एक हम एक्सप्लोर कर लेते हैं कि कैसी ये ऐप है, क्या है इस ऐप की इतनी खासियत, क्यों इतनी लोग इसकी बातें कर रहे हैं, क्या स्पेशल है इसमें। तो सबसे पहले हम उन ऐप की ही बारे में बात कर लेते हैं, है ना। तो ऐप जो है, जो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहते हैं, वो है आईडी ऐप। हालांकि ये एंड्रॉइड में बहुत दिन पहले से आ चुकी है, एंड्रॉइड में काफी लोग इसे यूज कर रहे हैं और बहुत खुश भी थे यूज करके, लेकिन रिसेंटली ये ऐप आईफोन के लिए भी बन गई है, यानी कि iOS के लिए भी आईडी ऐप लॉन्च कर दी गई है और ये बहुत एक्सेसिबल है और बहुत अच्छी है। लोगों की डिमांड थी, काफी सपोर्ट था एंड्रॉइड पे, इसी कारण से इन्होंने iOS के लिए भी लॉन्च की है इस ऐप को। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस ऐप को। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो आईडी ऐप है EYE-D, यानी कि EYE जो 1 के नीचे हाइफन आता है, जो एप्पल का कीबोर्ड है उसमें 1 के नीचे हाइफन आता है, तो EYE-D बाय जिंजर टेक्नोलॉजी। जिंजर टेक्नोलॉजी द्वारा ये ऐप तैयार की गई है, तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। इस एप्लीकेशन के जरिए हम काफी कुछ नियर बाई प्लेसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेविगेशन ऐप है एक तरीके से ये। आप अपने आसपास के हॉस्पिटल्स, रिलीजन प्लेसेस और बैंक, एटीएम, सुपरमार्केट्स, काफी सारी चीजें हम अपने आसपास की एक्सप्लोर कर सकते हैं। अपनी जो करंट लोकेशन है वो हम एग्जैक्टली इस ऐप के जरिए पता कर सकते हैं। बहुत एक्सेसिबल ये ऐप है और बहुत फेवरेट है लोगों के। एंड्रॉइड में बहुत पसंद किया था इस ऐप को, क्योंकि ये बहुत एग्जैक्टली लोकेशन बताता है। बहुत सारी ऐप्स है नेविगेशन के लिए, लेकिन ये जो ऐप है आईडी, ये बहुत एग्जैक्टली लोकेशन बताता है और बहुत सपोर्ट मिलता है इससे हमें। एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इस ऐप में, वो ये कि ये एक पिक्चर को भी आइडेंटिफाई करके बताएगा कि उसमें टेक्स्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है या फिर जो भी है, वो इस पिक्चर को एक्सप्लोर करके भी हमें बताएगा। तो है ना, बहुत इंटरेस्टिंग ऐप। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार खोल के देखते हैं ऐप में एक्चुअली है क्या और क्या क्या चीजें हैं इस ऐप में जो हम एक्सप्लोर करके देख सकते हैं। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें यूजफुल है, हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए ओपन करते हैं आईडी ऐप आईफोन में। ID. Welcome to ID app. Navigation drawer. But ID. Heading. Navigation drawer. Button. इसके बहुत टॉप पर लेफ्ट साइड कॉर्नर में नेविगेशन ड्रॉअर है, तो हम वहां से राइट स्वाइप करके देखते हैं और इसमें क्या क्या है। ID. Welcome to ID app. Navigation drawer. Button. ID. Heading. Where am I? Around me. See object in image. Read text in image. Contact us. Contact us. तो सबसे पहला ऑप्शन है वेयर आई एम, उसके बाद जो ऑप्शन है वो है अराउंड मी, उसके बाद ऑप्शन है सी ऑब्जेक्ट इन इमेज, उसके बाद है रीड टेक्स्ट इन इमेज, उसके बाद आखिरी ऑप्शन है कॉन्टैक्ट अस। तो सबसे पहले हम नेविगेशन ड्रॉअर को ओपन करके देखते हैं, जो कि ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है। Read text in image. See object in image. Around me. Where am I? ID. Heading. Navigation drawer. Button. Navigation drawer open. First item in list is app manual. ID. Heading. App manual. Rate on App Store. Invite friends. About version. About us. Terms and conditions. Where am I?
Terms and about us. Invite friends. Rate on App Store. App manual. App manual. App manual screen opened. This screen contains information about application features. ID. Back button. App manual. Heading. ID. App manual. Heading. Setting up ID for first use. 1. Ensure that VoiceOver is turned on. Note that ID works best with VoiceOver. 2. Double tap the app icon to launch the app. 3. Accept the terms and conditions and provide permissions. 4. Double tap any item in the menu to open/start using the mode. Below explained are the menu items and functionality. Where am I? Use this feature to know your location with respect to landmarks. Tap on any landmark to start navigation to the place. Around me. Use this feature to find and navigate to ATM, bus stop, bank, hospital, restaurant, store and cinemas nearby. Adjust the search radius on the top of the list to explore places up to 5,500 meters away. See object in image. Use this feature to know the contents of captured image/try exploring things around you by clicking pictures of what around. Read text in image. Use this feature to read text. Use this mode to read newspaper, books, forms, etc. Contact us. Use this mode to report issues, suggest improvements and talk to us. We would love to hear you. Contact us. ID. App manual. Back button. Closing app manual screen. App manual. Rate on App Store. Rate. App Store. In progress. Today. Back button. Return to ID. Button. Stat. Return to ID. Return to ID. Button. Stat. ID. Navigation drawer. Button. ID. Heading. App manual. Rate on App Store. Invite friends. Invite friends. Message. Button. Drag mail. Add to notes. Facebook. WhatsApp. Button. Draggable. Skype. Button. Twitter. Button. More. Button. Copy. Button. Save image. Button. Assign to contact. Print. Button. More. Button. Cancel. Button. Twitter. Skype. Button. WhatsApp. Button. Draggable. Cancel. Button. My status. Search. Search field. Search field. Search field. Is editing. Search. Character mode. Cap S. U. B. A. Subash Delhi. Subash Delhi. Suba. Selected. Subash Delhi. Next. Button. Next. Text field. Is editing. Check out ID. ID on the app. Text field. 2. Send. Button. Send. Dimmed. Navigation drawer. Button. ID. Heading. App manual. Rate on App Store. Invite friends. About version. Terms and conditions. About us. Navigation drawer. Button. Navigation drawer closed. जो नेविगेशन बार है उसमें हमें ऐप की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, कौन सी चीज किस पर्पस के लिए यूज आती है ये बताया गया है। ऐड मैनुअल का ऑप्शन उसके अंदर है, ऐप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है, कौन सा वर्जन है वगैरह। और इसके अलावा हम ऐप को रेटिंग कर सकते हैं यहाँ से और किसी फ्रेंड को इनवाइट भी कर सकते हैं। तो जब हमने सब कुछ सुना तो हमें काफी चीजें तो बहुत क्लियर हो गई
तो सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले क्लिक करते हैं पहले ऑप्शन पर। तो मैं राइट स्वाइप करती हूँ नेविगेशन बार के बाद। Where am I? तो सबसे पहले हम इस पे क्लिक करके देखते हैं कि ये हमें क्या बताता है। ID heading. Where am I? Where am cross alert? Where am I screen cross and current address 512-571 512-571 Sadar Bazaar, Lakadwala Colony, Balaram, Secunderabad, Telangana 500,010, India. The nearest landmark is Sripal Medical Hall. तो आपने देखा कि कितना एग्जैक्टली इसने मुझे लोकेशन बताया, और जो मेडिकल हॉल ये बता रहा है वो मेरे घर से एक घर छोड़कर, यानी कि एक शॉप छोड़कर, बस वो मेडिकल शॉप है। बहुत नियर बाई का लोकेशन है, ये बहुत ज्यादा नियर बाई है। तो हम और देखते हैं कि और ये मुझे कुछ बताता है। मेरे घर के सामने और मेरे घर के बिल्कुल राइट में, यानी कि बिल्कुल लेफ्ट में एक ज्वेलरी शॉप है और एक मंदिर भी है, जैन मंदिर भी है। तो देखते हैं हमें ये ऐप बताता है क्या। Where am I? Heading. Current address 512-6 Arden Jewelers, 7 meters. ओह वाओ, अरहन ज्वेलर्स ओनली 7 मीटर दूर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पास का ये लोकेशन हमें बता रहा है। Sripal Medical Hall, 18 meters. मेडिकल हॉल तो इसने बता ही दिया था, 18 मीटर्स ये मुझे बता रहा है। Shri Mallikarjuna Dairy Farm, 44 meters. Jain Mandir, 44 meters. जैन मंदिर, देखो मैंने बताया था ना मेरे घर के पास एक जैन मंदिर भी है, तो ये बिल्कुल बता रहा है। Suvalil Cloth Stores, 47 meters. Bajan Mandir, 69 meters. Hiralil Surana Gold and Silver House, 76 meters. Government Junior College, 87 meters. Gov. Junior College and School, LRMG, 105 meters. ZPHS Boys High School, 118 meters. Balaram Police Station, 139 meters. JP Ventech Private Limited, 180 meters. Balaram Bazaar, 209 meters. Brindavan Enclave, 253 meters. One Eam Center Officers Mess, 261 meters. Navabharathi College of Education, 309 meters. St. Anne's Boys School, 310. St. Anne's High School, 349. St. Anne's High School, 349 meters. 12 Medical Hall, 16 Saturday Alert. ID wants to open Google Maps. Secunderabad, Telangana 500,010, India. The nearest landmark is Sripal Medical Hall. Sripal Medical Hall 6 meter. Button. ID wants to open Google Maps. Cancel. Button. ID wants to open Google Maps. Cancel. Open. Button. Google Maps. Google Maps. Sadar Bazaar Road. Overflow menu. Button. 17.5187. 78.5181. Swap start and destination. Button. Driving. 1 minute. Public transport. Selected. Walking. 1 minute. Taxi services. 1 minute. Traffic and more. Button. Move to my location. But 1 minute. 10 meters. Offline. No traffic data. Via Sadar Bazaar Road. Back. Button. Return to ID. Button. Status bar item. ID. Current address 512. Where am I? Back button. Navigation drawer. Button.
तो इसने मेरे आसपास की कुछ स्कूल्स, कुछ मंदिर, कुछ शॉप्स, काफी कुछ बताया जो कि बहुत नियर बाई, मतलब 100 मीटर्स के अंदर अंदर का सारा कुछ इसने मुझे बताया और बहुत नियर बाई था यार। ये तो सच में बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, वाकई में बहुत हेल्पफुल रहेगा अगर हम कैब में आते हैं, अकेले ट्रैवल करते हैं, तो ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन साबित हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि और क्या क्या कमांड है इसमें। अगली ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अगला ऑप्शन है अराउंड मी, देखते हैं उसमें क्या है। वैसे मैं आपको बता दूं कि अराउंड मी में हम प्लेसेस सर्च कर सकते हैं, बैंक, एटीएम। तो चलिए एक बार उस पर क्लिक करके देखते हैं। Navaverity College of Education. 300 back button. Where am I? Back button. Contact us. Where am I? Around me. Around me screen opened. Showing the list of nearby categories. Back button. जी, तो ये हमें कैटेगरीज बता रहा है, तो देखते हैं क्या क्या कैटेगरीज है इसमें। Around me. Heading. 0%. Adjustable. Search radius. 500 meters. ATM. Bus stations. Bank. Cinema. Food. Hospital. Stores. Religious places. Religious places. बैंक, हॉस्पिटल, एटीएम्स, रिलीजियस प्लेसेस, शॉप्स, ये सब चीजें हमें भी ये सर्च करने के लिए बोल रहा है। 500 मीटर्स के अंदर के दायरे में हम ये सब चीजें इसमें सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बैंक सर्च करके देखते हैं कि 500 मीटर्स के अंदर कोई बैंक है या नहीं है। Bus station. Bank. Bank. Nearby places screen opened. Alert. Found 4 banks nearby you. OK. Button. Back button. Places. State Bank of India. 383 meters. Airtel Banking Point. 421 meters. Syndicate Bank. 439 meters. ICICI Bank ATM. 472 meters. तो मेरे घर के आसपास 4 बैंक इससे मिली और ये इसने मुझे बताई, SBI, ICICI, सिंडिकेट बैंक, ये सारी इससे मिली है। तो इस ऐप ने मुझे लोकेट करके दिखाई है। चलिए सिनेमा हॉल भी है, देखते हैं मेरे घर के पास कोई सिनेमा हॉल है क्या। वैसे मुझे तो नहीं लगता है लेकिन ऐप से देखते हैं, है तो पता लग जाएगा। Back button. Place. Back button. Around me screen opened. Showing food. Cinema. Nearby places screen opened. Showing the list of nearby places. Back alert. Sorry, no such places available nearby. Sorry, no such places available nearby. Okay. Button. जी, ये तो मैंने पहले ही बताया था कि मेरे घर के पास कोई सिनेमा हॉल नहीं है और इसने भी बताया कि नो सच प्लेसेस फाउंड। चलिए फूड देखते हैं, कोई नियर बाई कोई रेस्टोरेंट या ऐसा कुछ है तो। Store. Hot. Food. Cinema. Food. Food. Store screen opened. Showing the list of type of stores. Back button. Subcategories. Heading. Cafe. Bakery. Bar. Meal takeaways. Meal delivery. Supermarket. Nightclub. Restaurant. Restaurant. ओके, तो फूड में भी कैटेगरीज है, तो हम इसमें से एक कैटेगरी चूज करते हैं। चलिए हम एक कैटेगरी इसमें से चूज करते हैं। Restaurant. Near. Alert. Found 7 restaurant nearby you. OK. Button. Mahamedia Chicken Center. 274 meters. Royal Chili's Mini Multi-Cuisine Vegetarian Restaurant. 382 meters. Diku's Chinese Fast Food Point. 382 meters. Mao Food Court. 382 meters.
Guru's Veggies Corner. 382 meters. 01 Life to Eat. 382. 01 Life to Eat. 382 meters. जी 7 रेस्टोरेंट मेरे घर के आसपास बता रहा है, और जो भी ये लोकेशन हमें बता रहा है नियर बाय की, वो मैं आपको बता दूं कि वो 500 मीटर्स के एरिया के अंदर की ही बता रहा है। चलिए और भी कुछ सर्च करके देख लेते हैं। Back button. Plate. Back button. Store screen opened. Supermarket. Meal delivery. Meal takeaway. Bar. Bakery. Cafe. Subcategories. Heading. Back button. Around me screen opened. Food. Hospital. Nearby. Alert. Found 5 hospital nearby you. Okay. Button. Back button. Places. Diligence ran a charitable hospital and clinic. 111 meters. Dr. Malathi Rao. 336 meters. Cantonment Hospital. 300. Badraya Bone Setting Center. 371 meters. Shri Sai Krishna Generic Medicals. 380. Shri Sai Krishna. ये कुछ हॉस्पिटल्स है मेरे घर के पास, वो भी बता रहा है। तो देख रहे हैं आप, हम सुन भी पा रहे हैं कि कितना यूजफुल ऐप है। बहुत लोकेशन, अगर हम कहीं नई जगह पे जा रहे हैं और कुछ चीज हमें ढूंढना है तो उसके लिए बहुत, वाकई में बहुत बेनिफिट है इस चीज से, कि हमें किसी चीज की जरूरत है, कोई रेस्टोरेंट की, कुछ होटल की, नाइट बार, फूड के लिए भी, इवन हॉस्पिटल्स भी हम यहाँ पे देख रहे हैं, एटीएम भी हम यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, बैंक कोई आसपास में है तो वो सर्च कर सकते हैं। और बहुत, मतलब 500 मीटर कोई ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, हम जहाँ कहीं भी होते हैं। इवन अगर हम कोई ऐप खोलते हैं तो उसके लिए भी हमें 2-3 मीटर तो हम क्रॉस कर ही जाते हैं। अगर हम कार में जा रहे हैं और कुछ देखना चाहते हैं तो 5-10 मीटर तो हम ऐसे ही नॉर्मल ही जब तक ऐप खोलते हैं तो तब तक ही हो जाते हैं, है ना। तो 300 या 500 मीटर की डिस्टेंस तो कोई खास डिस्टेंस नहीं है। Back button. Place. Back button. Around me screen opened. Showing the food. Cinema. Bank. Bus stations. ATM. Nearby. Alert. Found 2 ATMs nearby you. Okay. Button. Back button. Places. Axis Bank ATM. 309 meters. ICICI Bank ATM. 473 meters. Back button. Play. Back button. Around me screen opened. Showing the list of nearby categories. 0%. Search radius. ATM. Bus stations. Bank. Cinema. Food. Hospital. Stores. Religious places. Religious places. तो एटीएम भी इसने हमें सर्च करके बताया कि 2 एटीएम मेरे घर के पास है, एक एक्सिस बैंक और एक आईसीआईसीआई बैंक के। तो अब काफी कुछ हमने एक्सप्लोर किया। अब मैंने आपको कैटेगरी भी सारी सुना दी, आपने देखा कि हम इसमें क्या क्या सर्च कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जाके देखते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। Back button. Around me. Back button. Navigation drawer. Button. ID. Where am I? Around me. See object in image. See back button. See object in image. Camera button. Camera button. See object in camera button. Camera alert. Image captured. Processing the image. Please wait. Alert. Result. Image contains purple, floor, wall, flooring, wood, hardwood, design, wood stain, angle, paint. OK. Button. Back button. Camera button. Camera alert. Cancel processing. Button. Alert. Result. Image contains purple, wall, light, table, furniture, floor, automotive exterior,
design, product design, glass. OK. Button. Back button. Camera button. Camera alert. Image captured. Processing the image. Please wait. Alert. Result. Image contains room, ceiling, wood, interior design, floor, angle, daylighting, flooring. तो यहाँ पर मैंने कुछ फोटोग्राफ्स लिए आपके सामने, आपने सुना। एक जो वॉल की फोटो थी उसने बताया कि पर्पल एंड वाइट पेंट है। एक जो मैंने टेबल की फोटो ली थी वो इसने बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करके बताई है। और उसके बाद मैंने एक साइड की फर्नीचर की फोटो ली थी, वो भी इसने बहुत क्लियरली बताया कि सीलिंग, रूम, सब कुछ आपने सुना कि कितना क्लियरली बताया है इसने। तो अब इमेजिन कर सकते हो कि अपने आसपास का जो सराउंडिंग है वो हम कितना इजीली इस ऐप के जरिए पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास क्या है, कैसा इंटीरियर है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है। जो भी चीज हम अगर इतना मतलब इतना अच्छे से शायद कोई 100% भी नहीं डिफाइन कर पाएगा। और इन केस अगर कोई हमारे पास नहीं ही है तो उस वक्त वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का गैदरिंग जो भी है, तो हम बिल्कुल ये चीज वहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करके देख सकते हैं फोटोग्राफ के जरिए। चलिए अब एक और ऑप्शन रह गया, वो भी हम चेक कर लेते हैं। Camera button. Back button. See back button. Back button. Navigation drop. Contact us. Contact us. Read text in image. Read text. Back button. अगला ऑप्शन है टेक्स्ट टू इमेज रीड कराने का। तो हम वो देखते हैं। एक बुक, ओह माय गॉड, अब मुझे टेस्ट के लिए तो कुछ चाहिए होगा। चलिए मैं एक बुक या पेपर लेकर आती हूँ, न्यूज़पेपर। तब तक आप एंजॉय करिए हमारे ये प्रोमोज और कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो उड़ान ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ में। बस अभी एक टेक्स्ट बुक लेके आती हूँ या फिर न्यूज़पेपर लेकर आती हूँ, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो मुझे टेक्स्ट बुक तो मिल गई है, तो देखते हैं। चलिए अगला ऑप्शन जो है हमारा, वो कैसे टेक्स्ट रीड करता है, नहीं करता है, चलिए चेक कर लेते हैं। Back button. Navigation drawer. Button. Contact us. Contact us. Read text in image. Read text. Back button. Camera button. Camera button. Alert. Back button. Image captured. Processing the image. Please wait. Alert. Result obtained. Make a new Saint Hindi / Telugu Stali Telugu / Hind. Stata bids. Hit. PH. 232052. INF. 613:97s/com. Parent signature August language Hindi / Telugu ND language Telugu / Hindi general science social studies /com parent signature at your signature date. 4 full stops. Result obtained. Okay. Button. जी, तो ये आपने देखा कि मैंने एक डायरी, अपनी बेटी का एक टेस्ट की फोटो ली और उसने पूरा वो पेज रीड करके बताया। थोड़ा सा फोटो डिस्टेंस से ली, इसलिए काफी कुछ उसने रीड कर दिया था। तो आप फोटो खींचते समय थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आप सुन सकते हैं कि कितना अच्छे से ये रीड कर रही है। एक हिंदी पेपर है मेरे पास, हम उसका भी कैप्चर लेके देखते हैं क्या ये हिंदी पढ़ती है या नहीं पढ़ती। Camera button. Camera button. Alert. Back button. Image captured. Processing the image. Please wait. Alert. Result obtained. HBA product of REGD. No. Daily Hindi Milipai Derabad. Sunday, April 8, 2018. Go number HHD 2022018-2020L. Inki. Sfar. 8 Gavin's men vertical line women vertical line kids this summer. Dress like you're already famo Chiragali Lane. Ah. Little Flower School. Abids. Hyderabad 001 PH. 66626233099.
Result obtained. OK. Button. Back button. Camera button. Came alert. Image captured. Processing the image. Please wait. Alert. Result obtained. 6, 9, 1, 4. Titterman Mintimer Smear. Iton underscore. 7, 6, 9. तो आपने सुना कि हिंदी तो नहीं पढ़ रही है, लेकिन हिंदी पेपर में जो जो इंग्लिश में लिखा था वो सारा इसने रीड आउट करके बता दिया। डेली हिंदी मिलाप के पेपर था, हमारे हैदराबाद का, तेलंगाना का लोकल पेपर था। तो हिंदी अभी नहीं पढ़ रही, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ रही है। चलिए, ये था ऐप। इसमें एक ऑप्शन और बच गया, कॉन्टैक्ट अस, तो वो भी एक बार हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। Result OK. Button. Back button. Back button. Navigation drawer. Button. Contact us. Contact back button. Support team is available right now. Support available from 10 a.m. to 8 p.m. Indian Standard Time in English and Hindi. Here you can tell us when you have an issue, feedback or suggestion to share. Currently there are 3 modes of contact. You can call us directly, SMS or email a team member to avail support. We would love to hear from you. Call a team member. Button. SMS a team member. Button. Email ID team. Button. Email ID team. Button. Email ID team. Cancel. Cancel. 2. Shaswitted ID. In. Text field. Add contact. CC/add. 2. Send. But. Mail for. Cancel. Cancel. Button. Alert. Delete draft. But. Delete. Back button. जी, तो ये था कॉन्टैक्ट अस। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो इसमें 3 ऑप्शन थे। 3 ऑप्शन के जरिए हम इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक कॉल कर सकते हैं, एक एसएमएस कर सकते हैं और एक हम इन्हें मेल कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कितना इजी था हर प्रोसेस में, हर चीज में। देखो तो ऐप बहुत यूजफुल है और बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत एक्सेसिबल भी है और होनी भी चाहिए। और इतना नियर बाई नेविगेशन बहुत कम ही देखने को मिलता है जो हमें इस ऐप में मिल रही है। चलिए, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद फिर मिलेंगे एक नई ऐप के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ, और इस वक्त मैं हूँ टेक्सिटी में आपके साथ, और हम बातें कर रहे हैं आज कुछ ऐप्स के बारे में। अभी तक हमने बात की थी आईडी ऐप की, जो अब तक एंड्रॉयड में यूज की जाती थी, लेकिन बहुत रिसेंटली ही उसे आईफोन यानी कि iOS के लिए भी लॉन्च कर दिया गया था। तो अब तक आपने सब कुछ मैंने आपको बताया, और बहुत अच्छे से हम आईडी ऐप के जरिए काफी कुछ अपने नियर बाई का लोकेशन पता कर सकते हैं, टेक्स्ट रीड कर सकते हैं। बहुत यूजफुल होगा हमारे लिए, वाकई में बहुत यूजफुल होगा, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि कोई फॉर्म आ जाता है या फिर कुछ चीज हो जाती है, कोई लेटर या कोई कार्ड ही ले लीजिए, कोई विजिटिंग कार्ड हो गया या फिर हमारा एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कभी कुछ हम भूल जाते हैं, तो वो हम इस ऐप के जरिए भी फोटो खींचकर टेक्स्ट को रीड करवा सकते हैं। तो बहुत यूजफुल है वाकई में। जब कोई नहीं होता हमारे पास, आसपास में कोई नहीं होगा, तो बहुत हेल्प मिलेगी इस ऐप के जरिए। हमें काफी हद तक हमें इंडिपेंडेंसी का एहसास कराएगी ये ऐप, क्योंकि हम इसमें फोटो खींचकर टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। अपने सराउंडिंग कुछ चीजें हैं या अपने सराउंडिंग कुछ आसपास में कुछ रखा है तो उसके बारे में हम जान सकते हैं। बहुत कुछ हम इस ऐप के जरिए जान सकते हैं। हालांकि ऑप्शन 4 ही है, वेयर आई एम अराउंड मी, सी ऑब्जेक्ट इन इमेज एंड रीड टेक्स्ट इन इमेज। इसके अलावा एक कॉन्टेक्ट का ऑप्शन था, जो कि हम इन ऐप डेवलपर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो वो भी हमने बिल्कुल कोशिश की उनसे बात करने की, और बहुत अच्छे से उन्होंने रिस्पॉन्ड किया और बहुत अच्छा लगा वाकई में। तो आप भी अगर कोई आपको चाहिए, कुछ डाउट्स है, तो वो बिल्कुल आप इन ऐप डेवलपर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि इसमें अगर हो सके तो मनी रीडर का ऑप्शन अगर लगा सकते हो तो लगाइएगा जरूर। तो यही सब ऑप्शन के साथ एंड्रॉइड में भी ये ऐप थी। थोड़े से ऑप्शन डिफरेंट थे एक आधा,
और एंड्रॉयड में पेड वर्जन भी है और फ्री है, दोनों भी है एंड्रॉयड में, लेकिन आईफोन में अभी तक सिर्फ ये फ्री ऐप है, आगे पता नहीं, फिलहाल ये फ्री है। चलिए अब हम एक और ऐप रिसेंटली लॉन्च की गई है माइक्रोसॉफ्ट के जरिए, वो है साउंडस्केप, जो कि अभी तक फिलहाल सिर्फ यूके में है, बाकी और कहीं किसी और शहर में या किसी और कंट्री में इस ऐप को लॉन्च नहीं किया गया। लेकिन वो भी ऐप कुछ इसी तरीके से है, लेकिन उस ऐप की जो खासियत है वो मैं आपको बता दूं। आईडी ऐप जो है वो नेविगेशन ऐप है, लेकिन जो साउंडस्केप ऐप है वो एग्जैक्टली नेविगेशन ऐप नहीं कह सकते हम उसको। साउंडस्केप SOUNDSCAP, साउंडस्केप ये स्पेलिंग है उसकी, SOUNDSCAP। ये लिखकर आप ऐप स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कंट्री और रीजन यूके करना होगा, तभी आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप की जो खासियत है वो मैं आपको बता दूं। एक सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि इस ऐप को आप हेडफोन लगाकर ही यूज कर सकते हैं। हेडफोन लगाना बहुत जरूरी है इस ऐप को। जब आप कभी रास्ते से जाते हैं तो ये ऐप आपको, अगर लेफ्ट साइड में लोकेशन होगी तो लेफ्ट ईयर में साउंड करेगी, और राइट साइड में अगर लोकेशन होगी तो राइट साइड में साउंड करेगी। अगर आप इसमें वैगन सेट कर देंगे, अगर आप अपना लोकेशन सेट कर देंगे तो ये एक म्यूजिक साउंड करेगी, और जैसे ही आपकी लोकेशन आ जाएगी ये साउंड स्टॉप कर देगी, तो जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी लोकेशन आ गई है। लेकिन अगर आप इसमें कोई भी वैगन सेट नहीं करते तो रास्ते में आने वाले कुछ स्कूल्स, टेम्पल्स यानी कि रिलीजन प्लेसेस, और इसके अलावा पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप्स, काफी चीजें हैं जो ये आइडेंटिफाई करके हमें रीड आउट करते रहती है। जैसे लेफ्ट में अगर कोई मॉल आ गया तो मॉल के बारे में बताएगी, कोई चर्च आ गया तो चर्च के बारे में बताएगी। ऐसे लेफ्ट और राइट जैसे बारी बारी है, जहां जहां पर लोकेशन आती रहेगी वहां वहां ये रीड आउट करती रहेगी। क्योंकि अभी ये सिर्फ यूके में है तो इसलिए इसमें ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। लैंग्वेज भी सिर्फ यूके की ही है, यूके इंग्लिश ही है अभी तक, और मेल फीमेल 2 वॉइस है इसमें। वैगन हमें, जैसे कि मैंने कहा, हम सेट कर सकते हैं, और ये हमारा डायरेक्शन भी बताती है, हम किस डायरेक्शन में बैठे हैं या खड़े हैं वो भी हमें बताएगी। तो चलिए एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं उस ऐप का भी हम। Soundscape. Soundscape. No beacon set. Menu. Button. Callouts on. Button. Set a beacon. Button. No beacon set. My location. Button. Around me. Button. Ahead of me. Button. Ahead of me. Button. Around my no beacon set. Set a beacon. Callouts on. Button. Menu. Button. Menu. Close menu. Button. Reference points. Button. Manage callouts. Button. Help and tutorials. Button. Settings. Button. Send feedback. Button. Send feedback. Button. तो जैसे कि आपने सुना कि कुछ ही ऑप्शन इसके अंदर है। जब मेन्यू में मैंने इसको क्लिक किया तो वहां पर भी हमें कुछ ऑप्शन सुनने को मिले। हम फीडबैक सेंड कर सकते हैं, सेटिंग हम इसमें मेन्यू में कर सकते हैं, और इसके अलावा भी वहां पर हेल्प एंड ट्यूटोरियल का ऑप्शन था, मैनेज कॉल आउट का ऑप्शन था, रेफरेंस पॉइंट्स का ऑप्शन था। तो चलिए हम एक एक क्लिक करके देखते हैं कि किसमें क्या चीज ये हमें बताता है और क्या सेटिंग करने के लिए हमें दिखाता है। Send feedback. Settings. Button. Back button. Settings. Heading. General settings. Heading. Voice and language. Button. Voice and settings. Back button. Voice and language. Heading. Speaking rate. Heading. Speaking rate. 50%. Adjustable. Voice. Heading. Selected. Female. Button. Male. Button. Language. English. UK. Language. English. UK. Settings. Voice and language. Button. Bluetooth. Button. Units of measure.
Heading. Imperial, yards, button. Selected. Metric, meters, button. Troubleshooting. Heading. Check GPS status. Check remote status. Check headset status. Clear stored map data. About. Heading. About Microsoft Soundscape. Button. Telemetry. Heading. Share usage data. Switch button. On. Help Microsoft Soundscape improve by automatically sending diagnostics and usage data. No personal data is collected. Help Microsoft Soundscape improve by automatically sending diagnostics and usage data. Share usage data. Switch back setting. Back button. Menu. Button. Callouts on. Button. Set a beacon. Button. No beacon set. My location. Button. My location. Heading north along Residential Street. Intersection with Stewart Road is 185 meters away. Around me. Button. Around me. Around you. Pulse School 375 meters. St. Anne's High School, Bolaram 230 meters. Ahead of me. Button. Ahead of me. Ahead of you. There is nothing to call out right now. Ahead of me. Button. तो यही कुछ ऑप्शन थे, अराउंड मी, अहेड मी और वेयर आई एम, माय लोकेशन। बस यही ऑप्शन थे जो कि आपने सुने। थोड़ा सा लैंग्वेज है तो यूके इंग्लिश ही, बट हमें थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं है वॉइस में। रिटर्न में हम बिल्कुल यूके इंग्लिश ही यूज करते हैं, लेकिन सुनने में अक्सर हम यूएस इंग्लिश सुनते हैं, तो उसकी ही हमें आदत होती है, तो इस कारण से भी हो सकता है, बट इतनी क्लियर नहीं है इसकी वॉइस। लेकिन फिर भी इसने मुझे बताया कि लेफ्ट में मेरे क्या है, राइट में मेरे क्या है। ये आप तब महसूस कर पाओगे जब आप हेडफोन लगाओगे, अदरवाइज आप ये नहीं फील कर पाओगे कि आपकी जो लोकेशन है वो लेफ्ट में है या राइट में है। लेकिन अगर हम इसे स्पेशली विजुअली एम्पायर पर्सन के लिए बात करें तो बहुत मुश्किल है हेडफोन लगाकर इस ऐप को यूज कर पाना, क्योंकि हम टोटली सुनने पर ही रिलाई करते हैं, सुनने पर ही हम डिपेंड करते हैं, और ऐसे में हेडफोन लगा के चलना रोड पे बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली विजुअली इम्पेयर पर्सन को, क्योंकि अदर साउंड भी हमें सुनना होता है, अदर बहुत सारी चीजें होती है जिसे सुनकर ही या जिसे फील कर जिसे महसूस कर ही हम हमारा मोबिलिटी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो देखिए, हो सकता है आने वाले टाइम में इस ऐप में काफी इम्प्रूवमेंट मिले हमें। हाँ, एक बार यूज जरूर करिएगा ताकि हम फीडबैक दे सकें और बता सकें कि हमें इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अब हम एक और बात कर लेते हैं। अक्सर लोग सीरी से बहुत कंप्लेन करते हैं, कहते हैं कि सीरी हमारी नहीं चलती है, नहीं जवाब देती है। तो एक और ऑप्शन है गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट के जरिए भी आप वो सारे काम करवा सकते हैं जो हम सीरी से करवा सकते हैं। एक्चुअली होता ये है कि जो एंड्रॉयड यूजर होते हैं, जो रिसेंटली एंड्रॉयड से आईफोन पे मूव करते हैं, तो उन्हें ये बहुत शिकायत होती है कि सीरी बहुत फास्टली काम नहीं कर पाती, काफी टाइम अटक जाती है। गूगल इतना नहीं अटकता, गूगल बहुत फास्टली काम करता है। लेकिन होता ये है कि जब हम सीरी को जब हम यूज करते हैं, थोड़ा सा भी हमारा नेटवर्क लो हो जाता है, तो उस एटमॉस्फेयर में या उस माहौल में सीरी बोलना बंद कर देती है। लेकिन थोड़ा टाइम लेती है, फिर बोल पड़ती है। लेकिन फिर भी इतना पेशेंस हमें नहीं होता, क्योंकि कभी कभी काम बहुत फास्ट करना होता है और सीरी की हरकतें हमें बहुत इरिटेट कर देती है। तो ऐसे में एक ऐप है गूगल असिस्टेंट, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको भी ट्राई करके देखते हैं एक बार कि उस ऐप में ऐसी क्या खासियत है जो लोग इसके बारे में इतनी बातें कर रहे हैं आजकल। Assistant. Meet your Google Assistant. Ask it questions. Tell it to do things. It's your own personal Google, always ready to help. Meenal Jane.
Minal Singh via gmail.com. Choose another account. Button. Continue as Minal. Button. Alert. Assistant would like to send you notifications. Notifications may include alerts, sounds and icons. Don't allow. Allow. Button. Be the first to know. Stay up to date on new features, apps, offers and more for your assistant. Get notified by email. On. Button. Next. Button. Open your stuff and explore. Button. You can view and manage your entire Google account history from My Activity. Assistant. Hi, I'm your Google Assistant. Heading. Assistant, I can help you find what you need and get things done. If you need help, just ask. What can you do? Apostrophe. Heading. Assistant, so, how can I help? Heading. What can you do? Button. Nearest coffee shop. Button. How far away is the moon? Button. Turn on flashlight. Button. Send feedback. Button. Open mic. Button. Open keyboard. Button. Open keyboard. Button. तो जब हमने असिस्टेंट को ओपन किया तो आपने सुना सब कुछ कि उसने क्या क्या हमें बताया और वो क्या क्या हमें हमारी हेल्प कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि सिर्फ हमें असिस्टेंट को ओपन करके 2 फिंगर से डबल टैप करना है उसको काम करवाने के लिए। जैसे सीरी के लिए हम बटन को प्रेस करते हैं तो सीरी बोल पड़ती है, लेकिन गूगल असिस्टेंट को यूज करने के लिए आपको उस ऐप पे क्लिक करके 2 फिंगर से डबल टैप करना होगा और फिर जो भी हम काम करवाना चाहते हैं वो हम इससे करवा सकते हैं। If you assistant, so, how can I help? Heading. What can you do? But what can you do? Open mic. Button. There are lots of things I can help you with. For example, you can say things like, what are your cricket plans? Or, when is sunrise? Assistant would like to access the microphone. Use your voice to interact with your assistant. Ask it questions and tell it to do things. Don't allow. Okay. Button. Assistant. Button. Or. What is the meaning of affection? Affection, a gentle feeling of fondness or liking. What is the meaning of affection in Hindi? Sneh. What is my location? Here is a map of Aditya Bank Colony, Bolaram, Sikandarabad, Telangana. Could you sing a song for me? This is my song. It's not very long. Call 1800-202-9898. Calling 1-800-222-9898. Alert. 1. Cancel. Button. Cancel. Button. इसने नहीं बताया क्योंकि ये कोई नंबर है ही नहीं। चलिए, set alarm for 7 a.m. Sorry, I can't set alarms on iPhone. Oh, अलार्म ये सेट नहीं कर सकती। ओके। What is the temperature in Hyderabad? The temperature in Hyderabad is currently 25. What is today's news? Here are some matching news articles. Mark Zuckerberg testifies in U.S. Assistant. And now for the news. Heading. Technology news. Button. What is the result of IPL match?
Kolkata Knight Riders lost to Chennai Super Kings by 5 wickets. Rajasthan Royals lost to Sunrisers Hyderabad by 9 wickets. Chennai Super Kings beat Mumbai Indians by 1 wicket. For other matches, try asking about a particular team. तो ये था गूगल असिस्टेंट। आपको इसे सिर्फ ओपन करके बहुत मामूली सी सेटिंग करने के बाद, जो बेसिक होती है अलाउ करने के बाद, आपको सिर्फ उसे यूज करना है। यूज करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 फिंगर से डबल टैप करना है और फिर एक्शन उसे देना है, यानी कि उसे बताना है कि उसे क्या करना है। तो फिर वो आपका जो भी कमांड होगा, आपकी जो भी वॉइस होगी, उसे वो फॉलो करेगी। उम्मीद है कि ये तो बहुत इजी है, तो आपको समझ आ ही गया होगा। सेम सीरी की वैसी ही है। कुछ चीजें हैं जो सीरी नहीं करती, जैसे कि हम अगर सीरी को बोलेंगे गाना गाने के लिए तो वो डेफिनेटली नहीं गाएगी, लेकिन वो आप गूगल से करवा सकते हैं। हिंदी मीनिंग भी सीरी नहीं बता सकती इतना प्रॉपरली, जितना आपने सुना कि इसने सेक्शन का, जैसे मैंने पूछा था, इसने बोल दिया 1 सेकंड में किसने है। तो काफी चीजें ऐसी है जो हम सीरी से नहीं करवा सकते, वो आप गूगल असिस्टेंट से करवा सकते हो। चलिए, ये था आज का हमारा शो। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा शो पसंद आया होगा। हम बीच बीच में ऐसे एप्स को लेकर आते रहेंगे, आप चिंता मत करिएगा। हम एक्सेल पर भी बने रहेंगे, हम अगला शो बिल्कुल एक्सेल पे ही करेंगे, लेकिन बीच बीच में जैसे कोई नई ऐप आएगी या कोई नई नई चीजें आएंगी तो वो भी हम लगातार करते रहेंगे। चलिए, अब मैं लेती हूँ आपसे विदा, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया और जाने का भी वक्त हो गया है। लेकिन आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहीं रहना है, क्योंकि अगला शो बिल्कुल रेडी है और मैं भी यहाँ से जाऊंगी, तभी तो अगला शो शुरू होगा। तो चलिए, मैं लेती हूँ आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी समय। तब तक के लिए आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ।